But before that, let's start the class. So we were on chapter number 5. Chapter number 5, and this was a Legend of the Northland. So this chapter was about the greed of a lady, and about Saint Peter. Now, who is Saint Peter? Saint Peter is जैसे कि क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट का ही एक रूप है, जैसे कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का ही एक रूप है सेंट पीटर. ओके, so and this is the story of Northland. Okay, this is the story of Northland. Northland यानी कि वो countries, वो cities. Yes, Mridul is raising his hand. What happened, Mridul? Children, my voice is clearly audible to you all. Very clearly audible. Give me a thumbs up if the voice is clearly audible and there is no disturbance in the voice. Children, give me a thumbs up. एकदम clearly आ रही है, कोई issue नहीं है इसमें, कट कट के नहीं आ रही है, right? Just give me a thumbs up, everyone. Okay, okay then. Okay, let's continue with the class. So, what happens in the chapter? There is a greedy lady, and then we have Saint Peter, and this is the story of Northland. This is a legend. Legend का मतलब ancient stories, जो पुरानी कहानियां होती है. So this is one of them. जो पुरानी कहानियां which pass from generation to generation. This story is one of them, and it keeps on passing in Northland. ये Northland की कहानी है. Northland के लोगों में सुनाई जाती है this story. Okay. So this story, what happens? Saint Peter is very hungry. Okay, he's fasting. And what is Saint Peter doing exactly? He is preaching all the people. लोगों को उपदेश दे रहे हैं. He has come from heaven to the earth, and he is preaching all the people in the world. He's preaching all the people in the world. And it has been whole day, पूरा दिन हो गया है. He has been preaching people. He has been giving advices to people. The whole day has passed and he has not eaten anything. और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है अब तक. So he was fainting with fasting. Okay, अब वो भूखे, एकदम भूख से बेहोश होने वाले थे. उनको ऐसा इतनी ज्यादा भूख लग रही थी. So then he stops outside a cottage. और वो एक cottage के बाहर, एक घर के बाहर रुकते हैं. What a lady is doing? She is baking some cakes. She is baking cakes. So Saint Peter asks for a cake. Saint Peter बोलते हैं कि मुझे भी आप एक केक दे दीजिए because I'm so hungry. So just give me a cake. Okay. So now let's see what happens and how this lady replies. Oh. So what happens? This lady, she bakes a cake. She's baking a cake and she gives one to Saint Peter. So Saint Peter को एक केक देती है, पर उससे पहले वो क्या करती है? She made a very little cake. Okay, so अब उसको सेंट पीटर को देना है, किसी और को उसको केक देना है. उसको नहीं पता है कौन है सेंट पीटर है, कौन है. उसके हिसाब से तो आदमी एक आया है घर के बाहर and he is asking for some food. So she made a very little cake. वो एक बहुत छोटा सा केक बनाती है. Okay, बहुत छोटा सा केक बनाती है. But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब जैसे ही उसने केक बनाया और उसको बेक करने के लिए रखा, उसको लगा ये she looked at the cake and thought, उसने केक की तरफ देखा और उसको लगा this cake is too large to give away. किसी को देने के लिए तो ये बहुत बड़ा केक है, किसी को देने के लिए तो बहुत बड़ा केक है, मैं छोटा सा केक दूंगी तो भी चल जाएगा. So this lady is very greedy, बहुत लालची है, very selfish, बहुत स्वार्थी है. So वो सोच रही है कि मैं छोटा सा केक दूंगी तो भी चल जाएगा, मैं इतना बड़ा केक क्यों दूं इसको. Therefore she needed another. So what does she do now? She needed another. Needed मतलब गूंथना. Children, write down the meaning of needed. Just mark the meaning of needed. We are doing the vocabulary part along with the when we are doing the chapter. Okay, so we are doing the vocabulary along with the poem. So please write needed का मतलब क्या है? गूंथना. Okay, गूंथना होता है. Therefore she needed, आटा गूंथना जो होता है. Therefore she needed another. So अब उसने क्या किया? उसको जो उसने पहले केक बनाया था वो तो उसको काफी बड़ा लग रहा है. She is thinking this cake is too large to give away. इतना बड़ा केक मैं क्यों दूं? So she needed another. So what did she do? She needed another cake and still a smaller one. और फिर भी उसने एक छोटा वाला बनाया, पहले वाले से और थोड़ा छोटा केक बनाया उसने. But it looked, when she turned it over, as large as the first one had done.
फिर भी जब उसने उस केक को देखा और उसको घुमा घुमा के देखा, शी लुक्ड एट द केक, बट उसको फिर भी लगा कि ये तो पहले वाले जितना ही बड़ा है, अभी भी ये छोटा नहीं हुआ है। तो उसको क्या लग रहा है बार बार कि मैं एक छोटा केक बना के दे दूं, इसको एक बड़ा केक नहीं बना के दूं। पर हर बार वो केक बेक कर रही है और हर बार उसको लग रहा है ये तो बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा और छोटा देती हूँ, ये तो और बड़ा बन गया, थोड़ा और छोटा देती हूँ। हर केक के लिए उसका ओपिनियन यही है, ठीक है। Then she looked at a tiny, then she took a tiny scrape of dough. अब उसने क्या किया, एक टाइनी स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या है, छोटा सा जैसे थोड़ा सा के छिलका, जैसे कि स्क्रैप का मतलब है थोड़ा सा, बिल्कुल वेरी टाइनी स्क्रैप, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा, बिल्कुल अमाउंट किसी भी चीज का, that is called as a scrap. Then she took a tiny scrap of dough. अब उसने थोड़ा सा आटे में से एक थोड़ा सा स्क्रैप निकाला, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, and rolled it flat. And what did she do? She rolled it flat. अब छोटा सा जो आटा निकाला, इतना सा आटा निकाला उसने और उसको रोल किया, उसको बेला, and baked it thin as a wafer. And what did she do? उसको एकदम वेफर के जितना, वेफर मतलब चिप्स के जितना पतला उसने एक केक बनाया, उतना छोटा एक केक बेक किया. But she couldn't part with that. लेकिन फिर भी what happens? She couldn't part with that. Part means अलग होना, ठीक है. So फिर भी this lady, this greedy old lady, she couldn't part with that. लेकिन फिर भी वो उसको नहीं दे पाई, उसको फिर भी लग रहा है ये तो बहुत बड़ा केक है, मैं तो और छोटा दे दूं, ठीक है. So this is about this lady that each and every time she is baking a cake for Saint Peter, but to her this cake seems very large. उसको हर बार लगता है कि केक तो बहुत बड़ा है और छोटा केक दे देती हूँ, चल जाएगा, ठीक है. So every time she is baking a new cake, and every time she thinks of the cake as a large cake, and again she bakes a smaller one, and again she bakes a smaller one, ठीक है. हर बार वो छोटा छोटा बेक किए जा रही है, फिर भी उसका जो ग्रीड है, उसका जो लालच है, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसको हर केक बड़ा लग रहा है. Okay, children, so let's do the poetic devices in these three paragraphs. Let's see if there is anyone. Okay, so there is okay, one poetic device I want to tell you all, that is repetition. Okay, repetition क्या है? There are two things, alliteration and repetition. ठीक है. Alliteration, you all know alliteration का मतलब क्या होता है? When similar sounds are repeating in a sentence, that is alliteration. For example, small c shells, so s sound is repeating, that is alliteration. Okay. स्मॉल के अंदर भी एस आ रहा है, सी के अंदर भी एस आ रहा है, शेल्स के अंदर भी एस आ रहा है, सो दैट इज अलिटरेशन, ठीक है. सो स्मॉल सी शेल्स, दैट इज अलिटरेशन, ठीक है. Now small C shells, these are three different words, but the S sound is getting repeated, so that is an alliteration, because S sound is repeating, so that is an alliteration. If another sound was repeating, that might have been an alliteration. लेकिन जो दूसरा poetic device है, which is repetition, ठीक है. दूसरा poetic device क्या है? Repetition. इसमें क्या होता है? Words get repeated. Okay, इसमें क्या होता है? Words repeat होते हैं. अवे इन नॉर्थलैंड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अवे इन नॉर्थलैंड. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम अ साउंड इज गेटिंग रिपीटेड, तो ये अलिटरेशन होगा? नो, यहाँ पे सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अवे अवे, तो ये क्या होगा? रिपीटिशन होगा. आर यू क्लियर विद दैट? अलिटरेशन के अंदर सेम साउंड रिपीट होती है, रिपीटिशन के अंदर सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं. यहाँ पे सेम अलिटरेशन में सेम वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पे सेम साउंड रिपीट हो रही है, स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, अवे अवे, ऐसा सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. Give me a thumbs up if you're clear with alliteration and repetition. You all are clear with alliteration and repetition, everyone? Is that clear to you? किसी को कोई भी डाउट है अभी भी तो भी पूछिए मुझसे. किसी को कोई भी डाउट है, just raise your hand and ask me if you have any doubt in alliteration and repetition. If you have confusion between these two, or if you have not understood any of these, then just ask me. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए please. No doubt. So I'm expecting that everyone knows what is an alliteration and what is a repetition, right? Okay, so children, let's do
I forgot to tell you the examples of repetition in this poem. So please take out page number 65, the beginning of the chapter, A Legend of Northland. The first line, away, away in the Northland. So that is a repetition. You got it? Away, away is getting repeated. First line, you all have your books with you, right? So in the first line, away, away in the Northland, away, away is repeating. That means same word, away is repeating again and again. So that is the example of repetition. Okay. And then again, yeah, this is okay. Then let's come to the paragraphs which we have learned today. What paragraphs were they? Oh, just a second, children. Then one more example of repetition is take out page number 66, the next page of the poem. Take out page number 66. Yeah, so page number 66, take out please. And there's again an example of repetition in the paragraph number 3 here. Here you can see, and rolled it flat. Okay, so rolled and rolled it flat, that is the example of repetition. Which word is getting repeated? Rolled and rolled. So that is a repetition. ठीक है, समझ में आ गया आपको? And an example of simile is here in this paragraph only. Simile मतलब क्या? Tell me. Yes, children, tell me what is a simile? Simile हमने पढ़ा था last paragraph, last lecture में. What is a simile? Kanika is raising her hand. Yes, Kanika. What is a simile? Ma'am, when we compare two things using the word as or like. Yes, correct. So when we compare, Ma'am, yes, I got it, Kanika. Good. Please mute yourself, Kanika. Your voice is not clear. Okay, so what happens in a simile when two words are being compared using as or like? That is called as a simile. Okay, जब दो words compare करते हो आप using as or like, then it is a simile. Okay. For example, यहाँ पे paragraph number 3 में what is a simile? Here it is a simile. And baked it thin as a wafer. So यहाँ पे कौन सी चीजें compare हो रही है? This is a simile. Line number 3. Baked it thin as a wafer is a simile. But what two things are being compared here? Yes, children, tell me, what are the two things which are compared in this line? Okay, Kanika is again raising her hand. Anyone else knows? Anyone else can get the simile in this line? And baked it thin as the wafer. Samir is raising his hand. Samir, please turn your camera on. Samir, please turn your camera on. Ma'am, baked is rapper. Refer. What? Please come again. Ma'am, baked with refer. नो बेक्ड को आप वेफर से कंपेयर कैसे करोगे? आप कंपेयर कर रहे हो बेक्ड इट को, और इट यहाँ पे क्या है? जो केक है उसको आप केक को वेफर से कंपेयर कर रहे हो कि जो केक था वो वेफर जैसा थिन था. एंड वी आर यूजिंग एज हियर, सो ये यहाँ पे क्या हो गया? सिमिली हो गया. एज या लाइक यूज करके यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो, सो इट बिकम्स अ सिमिली. समीर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एंड वन मोर थिंग, समीर अपना नाम वहां पे आप क्लियरली लिखिए, ये इमोटिकॉन्स के अंदर मत लिखिए. ओके, you write your name fully there. Okay, ma'am. With your class and section. Okay. Okay, ma'am. Okay, and Samir, please mute yourself. Okay, so here what are we comparing? What are the two things which we are comparing? We are comparing it as and what is it here? It is the cake. Samir, please mute yourself. And should I do that? Can you do it? I'll do it. Okay, so we are comparing the cake with the wafer. Okay, we are comparing the cake with the wafer using as, that's why it is a simile. Okay, so this line becomes a simile. And one more thing, this one, roll and roll, it is a repetition. Okay. Okay, so now this lady, what does she do? She decides that she decides to bake a smaller cake, and she bakes a very thin cake, as thin as the wafer. Wafer के जितना पतला एक cake bake करती है, but फिर भी she couldn't do that. But फिर भी she couldn't give the cake to Saint Peter. For she said, my cakes that seem too small
when I eat of them myself, कि मेरे केक्स, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, जब मैं खुद खाती हूँ तब तो बहुत छोटे दिखते हैं, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन फिर भी किसी और को दे रही हूँ तब तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, कि जब मैं खाती हूँ इतना बड़ा केक भी खा जाती हूँ और तो भी मुझे लगता है कि मैंने तो छोटा सा केक खाया, इतने से दिखते हैं, बट व्हेन आई एम गिविंग दिस टू समवन एल्स द केक सीम टू लार्ज, कि देने के लिए तो ये बहुत बड़े हैं, ठीक है. सो दिस शोज this lines this these lines which she is saying, they show the greediness of the lady, this shows the selfishness of the lady, that किसी और को देने के लिए उसके केक्स जो उसको बहुत बड़े लग रहे हैं और खुद खाती है तो उसे बहुत छोटे लग रहे हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उसने उसको नहीं दिया, एंड शी पुट्स द केक ऑन द शेल्फ. ओके, then good Saint Peter grew angry. So now what happens? Saint Peter grew angry. He becomes very annoyed. He becomes very irritated. For he was hungry and faint, because he was so hungry from the whole day, and he was about to faint. बहुत चक्कर आ रहे थे उनको. He was so hungry. And surely such a woman was enough to provoke a saint. Okay, provoke means किसी को भड़काना. Okay, when you annoy someone, आप किसी को भड़का देते हो, गुस्सा दिला देते हो, that is called as provoke. Okay, children, mark this word provoke. Provoke का मतलब किसी को भड़काना, गुस्सा दिलाना. And surely such a woman was enough to provoke a saint. So और ये ऐसी जो lady थी जो इतनी देर से वेट कर रहे थे सेंट पीटर कुछ खाने के लिए, but she did not give him anything. So this lady, and so Saint Peter, he grows angry with the lady, and he said, you are far too selfish. And what does Saint Peter say then? That you are far too selfish, कि तुम बहुत selfish हो, to dwell in a human form. Dwell का मतलब क्या होता है? रहना, किसी भी चीज में रहना. To have both food and shelter and fire to keep you warm. That the Saint Peter says to the lady that you are too far selfish. तुम बहुत selfish हो, कि human होने के बावजूद, कि तुम एक human being हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम कुछ bird नहीं हो, चींटी नहीं हो, तुम तो एक human being हो. You should be proud of that, but still you are very selfish to dwell in a human form. कि human being होने के लिए तुम बहुत selfish हो. तुमको फूड मिल रहा है, ठीक है, तुमको शेल्टर मिल रहा है. शेल्टर मीन्स घर मिल रहा है, तुमको एक घर में रह रही हो, तुम्हारे पास खाना है, यू आर हैविंग फूड, और तुम्हारे पास फायर है टू कीप यू वार्म. सो सेंट पीटर इज सेइंग दैट ऑल द एनिमल्स आउट देयर, दे डोंट हैव फूड टू ईट. उनको फूड अपना ढूंढना पड़ता है, उनके पास घर भी नहीं होता, उनको घर अपना बनाना पड़ता है, उनके पास आग भी नहीं है गर्म रहने के लिए. दे डोंट हैव फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. एंड यू, ओल्ड लेडी, you have food to eat, you have shelter to live, you have fire to keep you warm, and still you are so selfish. फिर भी तुम इतनी selfish हो कि मुझे एक छोटा सा केक नहीं दे पा रही. Now you shall build as the birds do. So अब Saint Peter उसे एक तरीके से श्राप देते हैं. Saint Peter is so angry, he is so annoyed, and he says, वो उसको बोलते हैं कि आज से you shall build as the birds do. तो अब से तुम क्या करोगी? जैसे चिड़ियाओं को घर बनाने पड़ते हैं, इतनी मुश्किल से एक एक तिनका लेके आती हैं और अपना घर बनाती हैं, वैसे ही तुम अपना घर बनाओगी. And shall get your scanty food. Scanty means very less. Okay, very less quantity of something is called as scanty. Mark this word. Scanty is very less quantity of something. So you shall build as the birds do. अब तुम क्या करोगी? जैसे birds अपना घर बनाती हैं मुश्किल से एक एक तिनका लाके, वैसे तुम घर बनाओगी. And shall get your scanty food. और जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके अपना फूड लाती हैं, वैसे ही तुमको अपना फूड मिलेगा बहुत धीरे धीरे. कैसे मिलेगा? By boring and boring and boring. Boring, mark this word. Boring का मतलब क्या होता है? जैसे खुदाई करना. ओके, सो जैसे तुमको अपना खाना अब कैसे मिलेगा? बहुत थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, और वो भी उसके लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बोर करना पड़ेगा. बोर का मतलब कोई भी चीज खोदना. दैट इज कॉल्ड एज बोरिंग. All day in the hard dry wood. पूरे दिन भर तुम जो सूखी सी लकड़ी है उसको जब तुम खोदोगी, तब जाके, पूरा दिन भर जब खोदोगी तब जाके तुमको अपना खाना मिलेगा. ऐसा उन्होंने उसको श्राप दिया. Then up she went through the chimney, never speaking a word. So now what happens? जैसे उसको ये श्राप मिला है, he has cursed the lady. So what happens now? She went through the chimney. So this lady, he goes into the chimney. चिमनी के अंदर चली गई वो एकदम से. Never speaking a word. एक भी word नहीं बोल पाई.
एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और उस चिमनी में ऊपर से टॉप पे से क्या निकला, एक वुडपेकर निकला. वुडपेकर, चिल्ड्रन डू यू नो क्या होता है? शायद लकड़ बग्गा बोलते हैं इसको. जो दिन आपने एक बर्ड देखी है जो दिन भर लकड़ी में कट 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 करता रहता है. जस्ट गूगल व्हाट अ वुडपेकर इज. ओके, गूगल करना तो आपको उसकी इमेज दिख जाएगी वुडपेकर की. ठीक है, तो वो पूरे दिन भर लकड़ी में, वो दिन भर जो पेड़ का तना होता है उसको टक 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 करता रहता है. शायद लकड़ बग्गा या आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में. जस्ट फाइंड इट आउट व्हाट अ वुडपेकर इज एंड सी द इमेज ऑफ अ वुडपेकर. तो अब चिमनी में वो लेडी चली गई और चिमनी में से क्या निकला, एक वुडपेकर निकला. ओके, एक वुडपेकर निकला. For she was changed to a bird. So now this lady has changed into a bird. Saint Peter has cursed this lady and the lady has turned into a bird. Okay, lady जो है अब वो bird में convert हो गई है. Aman Lohar is raising his hand. Aman, what happened? Aman, please again raise your hand again so that I can unmute you. Yes, Aman, something has happened. Nothing. Okay. Okay, so now the lady has turned into a woodpecker. अब जो lady थी वो क्या बन गई, एक bird बन गई, एक woodpecker बन गई. ठीक है. Okay, children, let's see the poetic devices in this one. So here, and surely such a woman. So surely such a woman, what is it? Very easy. Surely such a woman. What is it? This is an alliteration. The sir sound is repeating. Surely such a woman. So that is an alliteration. Okay. And I guess that's all. Yeah, there's one more in this paragraph. This paragraph. What is the sound? What is the poetic device used here? Yes, Kanika is raising her hand. Kanika, I'm unmuting you. I'm not able to. Okay, I'm not able to. Yeah, it's there. Ma'am, repetition. Which line? Ma'am, in last second paragraph, there by boring and boring. Yeah, good, correct. Kanika, please mute yourself. So there is a repetition in this paragraph by boring and boring and boring. Boring and boring and boring. The word boring is getting repeated again and again. So that becomes a repetition. Okay. So this is a repetition here. Okay. Okay. So now the lady has turned into a what? It turned into a woodpecker. अब lady क्या है? एक woodpecker बन गई है. So we are clear with our. Now what happens? Let's see. She had a scarlet cap on her head. Scarlet का मतलब क्या होता है? एकदम ब्राइट रेड कलर. ओके, सो ब्राइट रेड कलर की कैप थी. जो लेडी थी उसने क्या पहन रखा था? एक ब्राइट रेड कलर की कैप पहन रखी थी. स्कारलेट कैप पहन रखी थी. ठीक है. So she had a scarlet cap on her head and that was left the same. So अब वो लेडी जो थी वो वुडपेकर बन गई थी. बट जो लेडी ने रेड कलर की कैप पहन रखी थी, अब वुडपेकर के भी सर पे एक रेड कलर की कैप थी. आप एक वुडपेकर का सब लोग एक बार गूगल करिए एक इमेज प्लीज. वुडपेकर का एक इमेज गूगल करिए. लेट मी डू दैट. सो दिस लेडी हैज टर्न इनटू अ वुडपेकर एंड वुडपेकर क्या करता है? वुडपेकर दिस बर्ड बार बार वो पेड़ के अंदर बोर करता रहता है, पेड़ के अंदर छेद करता रहता है, तब जाके उसको उसका फूड मिलता है. ओके, जस्ट वेट. और उसका जो शक्ल है वो कैसी होती है? इट्स लाइक उसके सर पे एक रेड कलर का फेदर टाइप का होता है. ओके, सो दैट्स हाउ इट लुक्स. वेट. वुडपेकर. Okay, children, so that's how a woodpecker looks. I hope can you see that please? Woodpecker ऐसा दिखता है. ठीक है. So this is how a woodpecker looks. Okay, इसके सर के ऊपर क्या होता है? एक रेड कलर का कैप जैसा होता है. So similarly, the poem says कि वो जो लेडी थी, it had turned into a woodpecker and लेडी के सर के ऊपर भी रेड कलर की कैप थी, और जब वो woodpecker बन के चिमनी से बाहर निकली तब भी उसके सर के ऊपर रेड कलर की कैप थी. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम. सो लेडी वुडपेकर बन गई थी लेकिन कैप इट रिमेन्ड द सेम. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. लेकिन उसके जो सारे कपड़े थे लेडी के वो सब जल गए और वो
कोयले की जैसे काले हो गए फ्लेम के अंदर जल के दे टर्न ब्लैक एज अ कोल. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर स्कूल बॉय ने, हर बच्चे ने उस कंट्री में हैज सीन हर इन द वुड, लोगों ने उसको वुड के अंदर देखा है. वुड मतलब लकड़ी के अंदर, जंगलों के अंदर देखा है. वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो आज तक उस उन पेड़ों में रह रही है, उन जंगलों में रह रही है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. एंड व्हाट डज शी डू देयर, वो पूरे दिन भर वहां पे टक 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 करते रहते हैं. वुड पैकर जो है वो करता रहती है. वो लेडी जो है आज भी वुड पैकर की तरह बोर बोर कर रही है फूड के लिए पेड़ों के अंदर. सो दैट इज द स्टोरी अबाउट. ओके, सो या, so let's see the poetic devices in these two paragraphs. Yes, children, poetic devices in this paragraph. Tell me, what poetic device can you find in this paragraph? This one. Okay, Kanika is raising her hand again. Anyone else knows the answer? Anushka, I'm unmuting you. Ma'am, on first paragraph, last line, black as a coal in a flame. Yes. So what is the poetic device here? Ma'am, simile. Simile. And what are the two things which are compared? Coal and a black color, like a black color. No. All her clothes turned. Clothes and coal. Clothes and coal are compared. कि सारे जो कपड़े थे वो कोल की जैसे काले हो गए. Okay. Amni, good. Please. Ma'am, one more. Anushka, sorry. Please mute yourself. Ma'am, one more. Okay, tell me. Ma'am, in second, third line, where she lives, the trees till this very day. The ma'am आ रहा है three times. यहाँ पे okay, यहाँ पे आपका alliteration हो गया. ठीक है. And boring for food, it becomes your what? Repetition. Okay, so here are Anushka, good. Please mute yourself. Okay, so here we have the three poetic devices. First one is a simile. यहाँ पे हम simile है इस line के अंदर. Black as a coal. किसको compare कर रहे हैं? Black और coal को compare नहीं कर रहे हैं हम compare कर रहे हैं कि जो कपड़े थे वो कोल की तरह काले हो गए. ठीक है, तो हम किसको compare कर रहे हैं? कपड़ों को और कोयले को. कोयले की जैसे काले, क्या? कपड़े. तो clothes and the coal are being compared. Okay, this is a simile here in this line. And this lives in the tree till this very day. Okay, so the sound is getting repeated here. So it becomes your alliteration. Please mark it. This becomes your alliteration. The last line of the first paragraph, that was your what? That was the simile there. And as I told you, boring and boring, what word is getting repeated again and again? The boring word is getting repeated again and again. So it becomes a repetition here. Okay. Okay, children. So this poem is complete. One more thing let's do the question and answers part. I guess are very easy for this one. Let's do the this rhyming scheme of the poem. Do you all know what a rhyming scheme is? Okay, so let's do the rhyming scheme of the poem. यहाँ पे rhyming scheme देखते हैं. Poem की rhyming scheme क्या है? Rhyming scheme क्या है यहाँ पे poem की? Let's see. Just wait, children. Okay, so away in the Northland. अब यहाँ पे Northland. Last line यहाँ पे क्या आ रही है? Last sound क्या आ रही है? Land. Okay, so let's mark it as a A. Okay, where the hours of day are few. Land sound है यहाँ पे, तो it is an A. Few sound है, land और few different sound है, so that's a B. Okay, that's a B. And the nights are so long in winter. Winter, land, few, winter, सब different sounds है, so that's a C. Okay, I'm not able to write it so clearly. That's a C. And they cannot sleep them through. Okay, so through, it rhymes with what? Few. Few, through. Okay, so that becomes a B. Get it? You get it? That becomes a B. So what is the rhyming scheme of the poem here? A, B, C, B. Get it? A, B, C, B. So let's find out the rhyming scheme of this paragraph. Swift reindeer. ठीक है, reindeer. So that's a
D. आपको समझ में आ रहा है ये मैं कैसे कर रही हूँ? Do you get it all? Are you getting it, children? Rhyming scheme समझ में आ रहा है? Reindeer. Are you getting it or not getting it? Just tell me. Kanika is raising her hand. Kanika, what happened? Yes, Kanika, I'm unmuting you. Ma'am, the reindeer and winter cannot match. फिर से बोलिए. Ma'am, the winter and reindeer cannot match. No, we are finding the rhyming scheme of like for example of one paragraph. Okay, so that's how like Northland, winter. Just mute yourself, Kanika. There's so much disturbance. I'm telling you. Okay. So इस paragraph का हमने निकाला. It was A, B, C, B. Okay. So here Northland few away in the Northland where the hours of day are few. The nights are so long in winter that they cannot sleep through. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it slows. So, okay, so we find the rhyming scheme of one paragraph, for example. So here, reindeer and winter, no, they are not in the rhyming one. Or maybe they can be, let me see. It should be the third one, lesson, and the first one. No. Okay. So swift reindeer, D it is. When it snows become an E. Okay. Another sound it is. So E it is. And the children look like bear cubs. Reindeer, snows, cubs, nothing is rhyming. So that becomes an F. Okay. Yeah. Snows and clothes are rhyming. So it was an E. That also becomes an E. Are you getting? Okay, so let me, children, tell me the rhyming scheme of this paragraph number 3. Yes, I want to know from you all. The rhyming scheme of paragraph number 3. Anushka is raising her hand. Anushka, I'm unmuting you. Ma'am, first F, story. स्टोरी एफ हमने हम ए बी सी डी ई एफ हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे एफ तक. तो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जी. ओके, अलग साउंड है ये. स्टोरी इनसे किसी से मैच नहीं कर रही है. लैंड वाला जो साउंड है हमने ए दिया, फ्यू हमने बी दिया, विंटर साउंड ई दिया, थ्रू हमने फ्यू से थ्रू मैच कर रहा है तो इसको बी कर दिया. रेनडियर हमने डी दिया, स्नोज ई दिया, कब्स हमने एफ साउंड दिया. सब अलग साउंड थे इसलिए. स्नोज एंड क्लोथ्स ये मैचिंग है तो हमने ई कर दिया इन दोनों को. ठीक है, अब स्टोरी को आप साउंड स्टार्ट करिए अनुष्का. जी. ओके, सो स्टोरी एंड सेकंड ट्रू फ्यू, बी. ट्रू फ्यू. ओके, सो दैट बिकम्स बी. ओके, या. लेसन एच यू. ट्रू यू. You true. Same. That comes a B. Same. ठीक है. So is okay. Good Anushka. Please mute yourself. So एक तरीके से हमारी rhyming scheme यहाँ पे क्या हो जाती है? A B C B D E F E ऐसे समझ गए आप? जो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन है वो सबकी मैच कर रही है. सारे पैराग्राफ्स की देखिए. Below no मैच कर रही है. Earth hearth मैच कर रही है. Done one मैच कर रही है. Okay. So similarly all the lines in the on all the lines they are matching. ठीक है. Another, over, do, wait, sorry, flat, that, one, done, myself, shelf, faint, saint, form, warm, food, wood, word, bird. Getting it? All these are matching. The second and the fourth lines in all the paragraphs are matching. Okay, their sound is repeating the same. Okay, children, do you have any doubt? We will continue with the question and answer in the next class. It will just take a few minutes. Yes, children, do you have any doubt in today's lecture? Anyone is having any doubt? Just tell